Hello everyone. So this is the second lesson in the series of influence line diagram for trusses. In the last lecture we have learned about influence line diagram for the top chord members, and in this lecture we will deal about influence line diagram for the bottom chord members. Okay, so let's get started. So this is a truss. I've taken a section 1 over here. Okay, so let's draw the influence line diagram for the bottom chord members. So this and this, all these things are bottom chord members. Okay, so let's start it. So ILD for bottom chord L0 L1, sorry, L0 and L1. Okay, so I have to draw influence line diagram for L0 and L1. So how will it look? Okay, just observe this thing. Okay, I've taken a section 1 Okay, and if I will consider a unit load on the left of the section, ठीक है, this ये मेरा section है. अगर मैं कोई भी unit load, if I'm considering any unit load on the left of the section, suppose my unit load is on the joint L0. Okay, my unit load 1 kilonewton is on the joint L0. Okay, so do you think, if I'll take a moment about this joint, if I'll take a moment about just listen, I have to draw ILD for L0 and L1. What is the opposite joint? In this last lecture we have learned we have to consider the opposite joint, and with respect to that we have to take a moment and draw the influence line diagram, right? So for L0 and L1, U0 is the opposite joint. ठीक है, opposite joint of L0 and L1 is U0. ठीक है, U0 is in the same line of L0. U0 is in the same line of L0. Do you think if I'll take a moment about U0, that is L0, I will get any value? No, we won't get any value, right? For example, if I'll take moment about L0, my 1 kilonewton load is also on the L0. ठीक है, so I won't be getting the values of R1 and R2. इसका मतलब अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट लेता हूँ L0 के अबाउट, दैट इज U0 के अबाउट मोमेंट लेता हूँ, क्योंकि इसका ऑपोजिट जॉइंट जो है वो U0 है. अगर मैं इसके अबाउट मोमेंट लेता हूँ तो मुझे R1 और R2 की वैल्यू मिलेगी नहीं, और अगर मुझे R1 R2 की वैल्यू मिलेगी नहीं तो मैं बॉटम कॉर्ड मेंबर्स का मोमेंट नहीं ले सकता. मतलब मैं बेसिकली ILD for L0 L1 and L5 L6 is 0, because ये जो मेरा ट्रस है, दिस ट्रस इज सिमेट्रिक ट्रस, राइट? देख के समझ में आता है, इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रस. ठीक है, so if L0 and L1 is 0, similarly L5 and L6 will be 0. ठीक है, हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन की तरह से भी दे सकते हैं. दो मेंबर मेरा कोलिनियर है तो तीसरा मेंबर मेरा जीरो फोर्स मेंबर होगा. ठीक है, तो मेरा ये जो है यहाँ पर जीरो और यहाँ पर जीरो फोर्स मेंबर्स आ जाएंगे मेरे. ठीक है, ये मेंबर कोलिनियर है तो तीसरा मेंबर मेरा जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा, राइट? तो ऐसा मेरा L0 L1 L5 L6 जो है मेरा जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, दिस इज ILD फॉर L0 L1 and L5 L6. Okay, so let's draw the influence ठीक है, influence line diagram for L1 and L2. Okay, यहाँ पर वो ध्यान से देखना. एक्चुअली लाइक डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू नो द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि ये मेंबर जीरो क्यों आया. ठीक है, या तो मैं इसको ऑब्जर्वेशन की मदद से इससे मैं समझ सकता हूँ. आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग बाय ऑब्जर्वेशन. दीज टू मेंबर्स, दिस एंड दिस आर कोलिनियर, सो दिस मेंबर विल बी जीरो फोर्स मेंबर. ओके, वन वे इज दिस वन, एंड अनदर वे इज, अगर ये मेरा L0 एंड L1, ये मेरा इसका ऑपोजिट जॉइंट U0 है. अगर मैं U0 के अबाउट मोमेंट लेता हूं, इसका मतलब मैं L0 के अबाउट मोमेंट ले रहा हूं, राइट? आई एम टेकिंग द मोमेंट अबाउट U0, इट मींस दैट आई एम टेकिंग द मोमेंट अबाउट L0. ठीक है, अगर मैं L0 के अबाउट मोमेंट लेता हूं तो R2 into दिस वैल्यू होगा, लेकिन मेरा 1 किलोन्यूटन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन, ऐसा. तो देयर विल बी नो मूवमेंट, R1 और R2 की वैल्यूज मुझे आएगी नहीं. ठीक है, सो दिस विल बी सो उसके लिए मेरा ये वैल्यू जो है ये मेरा जीरो मेंबर आ जाएगा. ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर ध्यान देना चाहिए हमें. एंड उसके बाद सेकेंड पार्ट में विल ड्रॉ ILD फॉर मेंबर
L1 and L2, basically L1 L2, ठीक है. Now this is very simple, L1 and L2, ठीक है. L1 and L2 का ऑपोजिट जॉइंट कौन सा है? U1, राइट. अब मैं यहाँ पर मूवमेंट ले सकता हूँ, ठीक है. अगर मेरा यूनिट लोड ये जॉइंट पे भी होता है तो भी आई कैन इजीली कैलकुलेट नाउ. अब मैं सॉरी, अब जस्ट अ सेकंड, अब मेरा L1 एंड L2 उसका ऑपोजिट जॉइंट U1 है. अब मेरा जो यूनिट लोड रहेगा वो यहाँ पर रहेगा. नाउ आई कैन इजीली गेट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2, ठीक है. यहां पर क्या हुआ था कि जीरो क्यों आया था? क्योंकि L0 एंड L1 के ऑपोजिट जॉइंट मेरा U0 था और यहां पर मेरा यूनिट लोड था, ठीक है. जस्ट बिकॉज माय यूनिट लोड वाज ओवर हियर, दिस वाज अ कोलिनियर जॉइंट, ठीक है. सो यहां पर मेंबर्स मेरे फोर्सेस मेरे जीरो आ गए थे. बट इस केस में क्या होगा कि इस केस में यहां पर इसके अबाउट मुझे यहां पर मेरा यूनिट लोड है और मैं L0 के अबाउट मूवमेंट ले लूंगा तो मेरे वैल्यूज आ जाएंगे. तो हमने देखा था कि जैसे ही हमने टॉप कॉर्ड और बॉटम टॉप कॉर्ड मेंबर्स में किया था, हमें सिर्फ एक चीज याद रखना है कि ए बी अपॉन एल एच, ये चीज याद रखना है और हमें वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है. सो यूजिंग दिस थिंग आई विल ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर द मेंबर L1 एंड L2, ठीक है. सो दिस इज L0, दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, L4, okay, this is L5 and this is L6, ठीक है. So I've made the span and U1 is the joint, ठीक है. L1 and L2 का मुझे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम निकालना है. सो ऑपोजिट जॉइंट इज U1, ठीक है. U1 लुको भैया, ऑपोजिट जॉइंट इज U1, ओके. सो इसका मतलब कि इट्स ऑन द लाइन ऑफ L1, राइट. U1 मतलब L1 है ना. तो what I will do, I will elevate this portion like this and this, ठीक है. ये हो गया मेरा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ILD फॉर L1 L2, ठीक है. नाउ व्हाट विल बी दिस वैल्यू? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है. इट विल बी A B अपॉन LH, राइट. व्हाट विल बी A एंड व्हाट विल बी B, ठीक है. दिस वैल्यू L0 टू L1, ठीक है. what is L0 to L1? For suppose this is 5 meters, each span is 5 meters, 5 meter span, okay. Suppose this is each span is 5 meter, so it will be 5, ठीक है. and how many panels are there? 1 2, okay, 1 2 3 4 5 6, okay. so total length is 30 meters. Each span is 5 meters, okay, and height is suppose 5 meters, all right. So it will be, what is this is 5 meters, L0 to L1 is 5 meters and remaining is 25 meters, right, because the total length is 30 meters. Total length is 30 meters. My if this is A and this is B, all right. So if this is 5 meters, so the other proportion will be 25 meters, so it will be 5 into 25 upon what is total length 30 into what is height 5, all right. So we'll get the value, ठीक है. So next ILD for member L2 L3, all right. So what I will do, I will first look at what is the opposite joint of the member L1 L2 and L3, ठीक है. L2 and L3, U2 is the opposite joint, right, and U2 is corresponding to L2, right. U2 जो है मेरा L2 के सामने है, ऊपर है. U2 is corresponding to L2, ठीक है. So what I will do, I will just draw the span and it will look like this: L1 L2 L3 L4 L5 L6, right. So what I said कि I have to draw the influence line diagram for L2 and L3, ठीक है. The opposite joint is U2, ठीक है. Opposite joint is U2 and U2 is corresponding to L2, so I have to elevate the joint L2. So I have to elevate the joint L2, okay. So it's like it starts from L0, so it will be something like this, yes, okay. So I just have to calculate this portion. This, what is this? This is again AB upon LH, okay. So this is 5 meters, this is 5 meters, so here it is 10 meters. My total length is 30 meters, so this will be 20 meters, okay. So A will be, this is A and this is B, so it is 10 into 20 upon 30 into 5,
ठीक है, my height of the truss is 5 meters. It's been given, it will be given in the question. ठीक है, so this is for member L2 and L3. ठीक है, fourth will be ILD for, okay, just a second, ILD for member L3 and L4. ILD for member L3 and L4. Member L3 and L4. ठीक है, again let's draw the span first. ठीक है, this will be L0, this will be L1, this will be L2, this will be L3, this will be L4, this will be L5, and this will be L6, right? So what I have to do, I have to, just a second, what I have to do, I have to check which joint is opposite to the bottom chord L3 and L4. हम देखते हैं कि कौन सा joint L3 and L4 के opposite है. कौन सा joint opposite है? U4. U4 is corresponding to L4, मतलब मुझे L4 को elevate करना पड़ेगा. ठीक है, so it will look something like this and this. ठीक है, अब मुझे ये वैल्यू निकालनी है. What will be this value? Again AB upon LH. ठीक है, so what will be it? 5 5 5 5. ठीक है, this will be 20, this will be 10. ठीक है, so it will be 20 into 10 upon 30 into 5. Simple. I hope we are clear with this. Similarly, ILD for member L5 L6, right? So it will be something like this. ठीक है, L0 L1 L2 L3 L4 L5 and L6, right? So what I have to do, I have to check which joint is opposite to the member bottom chord L5 and L6. Let's see, L5 and L6, it is U6. Okay, it is U6. We know कि it will be a L5 and L6, it will be a zero member. ILD will be 0. ठीक है, why it is 0? We have learned in the earlier case, right? This one, just a second, this one, ILD for L0 L1 L5 and L6, right? Why it is 0? We have learned it, right? Because if I'll take a moment about this joint, I will get nothing, it will be 0. ठीक है, and these two members are collinear, and so this will be a 0 joint member. ठीक है, so with this we have completed the influence line diagram for the bottom chord members. Bottom chord members and top chord members are very simple. The only thing you have to remember is A B upon LH. ठीक है, and like you have to remember two things, you know, two things we should remember for top chord and bottom chord. ठीक है, what are these two things? First of all, whichever member you have to calculate, you have to check the opposite joint. ठीक है, check the opposite joint. ठीक है, second, elevate that joint, elevate that joint. ठीक है, and what will be third? Third will be value, intensity will be AB upon LH. ठीक है, just focus on one thing. I have अच्छा, what will be it's you know, whether it will be compressive or tensive, whether it will be positive or negative, what will be these values. ठीक है, we know, you know, we have, like in the last lecture also, I have told you कि like above the neutral axis there will be compression, and below the neutral axis there will be tension, right? So this will come out to be positive, this will come out to be positive, this will come out to be positive, and this everything will be like positive. This is for positive and negative. ठीक है, similarly in bottom chord members, just note one thing, over here. Note, for just understand this thing, it's very important. For top chord members, ठीक है, members are in compression, that is negative. ठीक है, for bottom chord
members are in tension, that is positive. All right, so with this we have completed the top chord members and bottom chord members. Okay, so in the next lecture we will learn about the influence line diagram for the inclined members and the diagonal members. Okay, thank you very much.